हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 1792 मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो। तो बीच में वीडियोस बंद हो गए थे आना, लेकिन मैं कंसिस्टेंट ही था। बस हम लोग नया फ्लैट ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अभी भी ढूंढ ही रहे हैं, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। कि ओके, मैंने कुछ लिखा है, इसको हटा देता हूँ। और पहले से भी सॉल्व कर रखा है एज यूजुअल, मैंने आज ही सुबह किया था। तो देयर इज अ स्कूल दैट हैज़ क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें क्लासेस हैं। देन ईच क्लास विल बी हैविंग अ फाइनल एग्ज़ाम, और हर क्लास का एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो यू आर गिवन ए 2D इंटीजर एरे क्लासेस वेयर ईच इंडेक्स class at each index will have a pass and total. So pass is the total number of students that pass the exam, and total is the total number of students that were there in the class. तो ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा है, आप फटाफट गो थ्रू करो। देन यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। तो कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स दिए हैं जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, एंड वो गारंटीड है कि पास करेंगे। ठीक है, एंड तो तुमको एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को क्लासेस में असाइन करने हैं सच दैट कि एवरेज पास रेशियो अक्रॉस द क्लासेस मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब जल्दी से देखते हैं डेफिनेशन कि पास रेशियो क्या है। कि पास रेशियो इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास्ड इन अ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in that class. Then the average pass ratio is the sum of all the pass ratios divided by the total number of classes. Then return the maximum possible average pass ratio. तो जो भी एवरेज पास रेशियो होगा वो मैक्सिमम हो सकता है, राइट। अलग अलग केसेस में, जैसे हमने एक स्टूडेंट इसको अलॉट किया, एक इसको अलॉट किया, तो कुछ पास रेशियो आएगा एवरेज, और एक इसको किया और या एक इसको किया तो कुछ अलग आएगा। तो उन सब में मैक्सिमम हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये है, तो अभी इसका पास रेशियो है 0.5 विच इज़ दिस, प्लस 0.6 विच इज़ 3/5 प्लस 1, right? And we have 2 extra students, so currently it is 0.7, मतलब it is 2.1 divided by total number of classes 3, which is 0.7। तो अभी देखो यहाँ पे 50% है, 0.5, एंड वी हैव, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, वी हैव 2 extra students। So now since we have 2 extra students, तो let's say हमने अभी इसका परसेंटेज है 0.5, 50%। देन अगर हम एक स्टूडेंट इसको दिया, देन इट बिकम्स 2/3 विच मेक्स इट 67%, विच इज़ 17% इंक्रीज़। और अगर जैसे ये 60 है, इसको हम एक देते हैं तो 4/6 विच इज़ 67%, तो ये 7% इंक्रीज़ है। और ये 1 है ऑलरेडी, तो इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। देयरफॉर तो अभी हम यहाँ से क्लियरली इंट्यूटिवली ही पता चल गया कि जहाँ पे भी ग्रोथ रेट हाईएस्ट है, वहीं पर हम असाइन करेंगे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। ओके, तो इस चीज़ को करने के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर में ग्रोथ रेट होगा जिसका हम +1 करने पे, वो ही हमको हर बार मिले, और हम एक स्टूडेंट असाइन करके दोबारा इंसर्ट कर दें डेटा स्ट्रक्चर में। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमको हीप बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, राइट। और हमको मैक्सिमम ग्रोथ मिले, वो वाले नंबर्स पहले चाहिए। तो इट शुड बी अ मैक्स हीप व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो हम फिर बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है, इम्प्लीमेंटेशन।
और हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे. हमारा इनपुट साइज है 10⁵ मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्लास. तो वी वुड बी लाइक इट वुड बी ग्रेट लाइक बिकॉज एनालॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम सपोर्ट कर पाएंगे, जो कि प्रायोरिटी क्यू लेगा अपने आपको बैलेंस करने में बार बार. तो विल स्टार्ट. सो ये एक प्रायोरिटी क्यू ऑफ अरे होगी. लेट्स नेम इट पी क्यू इक्वल टू न्यू priority queue. We'll have to write a custom comparator logic for this one. So let's say we have two numbers, like two arrays being passed here. So we will do double dot compare, and let's say we have a method that returns gradient b of 0, b of 1. So here b of 0 represents the number of passed students in array b, and we'll compare it with gradient of a of 0 comma a of 1, right? So why we took b first? Because we want it to be a maxi, so the smaller ones would go behind, like comparing, like opposite of how we usually compare. So yeah, now we will insert. So for int I is equal to 0, I less than classes dot length I plus plus pq dot add classes of I. भी add हो गया. So we'll take a double answer is equal to 0. Now while extra students is greater than 0, and then for the worst case, like मतलब इनिशियली ही हम कुछ पॉपुलेट ही नहीं कर पाए प्रायोरिटी क्यू में. डोंट थिंक दैट केस विल अकर, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट. अगर इज नॉट एम्प्टी, then we'll do what int temp equal to pq dot poll. So we'll get it from the array. Now what we will do is temp of 0 plus equal to 1, temp of 1 plus equal to 1. We'll again add temp to the priority queue, and we will subtract extra students minus minus, like one extra student has been taken, right? Now while not pq dot is empty, do answer plus is equal to pq dot. Okay, so we'll get it in some temporary array again, pq dot poll, and we will do what temp of 0 divided by double temp of 1. Okay, now we will return answer divided by double what is the name, classes dot length, and we have to write a gradient function that returns a double gradient which takes in two integers, value 1. So we'll name it pass, and we will name it total. So we will return, we simply return, like we will calculate double result after is equal to pass plus 1 divided by
double total plus 1 and double result before is equal to and we'll return simply result after minus result before, right? आई गेस दिस शुड वर्क. जो भी हमने लॉजिक डिस्कस किया वो यहाँ पे हमने लिखा है, बट ऑब्जेक्ट फाउंड. सो ऐसी मैंने क्या किया है कि कंपेयर BO0 BO1 ऐसा के BO1 array required but an object found. ओके यार, हाँ हमने क्या मिस्टेक किया है कि अगर दो नंबर्स हैं तो हर एक इंडेक्स पे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू तो होगी ही होगी, राइट? ओके सो okay, so we don't have to do this in before. Now our answer is correct, so we will submit the test case, like the code, and yeah, that's it for today's video. The time complexity will be n log n for this part, where n is length of classes. Then it is running extra students time, so in the worst case it is 10 to the power 5, which is n in worst case. Then this will also run again like n log n times, like because n times we are running the loop and log n is the time to balance. Then yeah, that's it for today's video. We'll see you in the next one.